always tell you what I want to say. Baby, did you feel the same? I remember laughing and playing games. हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल से ज्ञान बाबा में। आज मैं दिखाने वाला हूं आपको हॉस्पिटल का जो रैंप है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसके बारे में बताने वाला हूं मैं आपको। गाइस चलते हैं, जो सिविल इंजीनियर है इस वीडियो जो आखिरी तक देखें। जो मैं हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन वर्क है वो दिखाने वाला हूँ और रिटेनिंग वॉल का वर्क दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं गाइस। गाइस, दिस इज रिटेनिंग वॉल, यू कैन सी, एंड हियर इज द रैंप। This is the beautiful view. This is the retaining wall, and this is the hospital. And here is the car block. Guys, this is the hospital of G+3 hospital, and this is the ramp, and we are in the lower basement right now. So we construct the retaining wall, and the retaining wall size is 300 mm. So here you can see the how the carpenters set the plyboard on the wall. So this is the retaining wall, guys, and this is the stopper. आप देख सकते हैं. So and here is the cover block. Okay guys, you can see this is the stair elevation, and right now we are in the basement. So I will update you how they construct the ramp and give you knowledge. So we are right now in the lower basement of the front. So here we are first we excavation of this clay mitti, and then here we circulate the ramp. So I will update you. Please subscribe my channel, guys, and support me and share the video. And this is the hand grinder machine, you can see. This is the hand grinder machine. This you can cut the steel bar easily. And this is the hilti, you can see. This is the hilti. This is the plyboard, and this is the batten of 4 inch, and here is the dowel. When the level is in that level, so here is the dowel, we can slab on that in lower basement slab, then upper basement slab. Here is the dowels of lower basement, and here is the dowels of upper basement. So guys, thank you for watching my video. Please subscribe my channel, guys. Support me, support engineers. Thank you.
सो गाइस देखो ये हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल बन रहा है। अब मैं इस तरफ ये लोअर रैंप में जा रहा हूँ। सो हम ये लोअर रैंप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये रिटेनिंग वॉल है, आप देख सकते हैं ये। फिर यहाँ से हम इसी स्लोप में ले जाएंगे इसे। ये देखो गाइस ये रैंप है पूरा। ये डावल्स छोड़े गए हैं। जब ये रैंप ऊपर आ जाएगा फिर इससे इसे मिलाया जाएगा, स्लैब डालेंगे फिर इसमें, तब जाके बेसमेंट कंप्लीट होगा। ये देखो ये फोल्डी गेट्स हैं। Without